చేస్తాను. Good morning, everyone. On behalf of Poultry India, I welcome you all for lamplight. वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धिविनायक नमः। Please sit everyone in their respective seats on the dais. Thank you very much. I request Anil Dumal sir, founder president sir, to take over the mic. Uday, you can honor the guest with the bouquets.
Shrikant. Good morning, namaste. Ladies and gentlemen, friends from print and digital media, and our honorable guests. It gives me great pleasure to welcome you all for this press conference on the occasion of Poultry India exhibition. The journey that began in 2007 with a simple but a powerful vision. The Indian Poultry Equipment Manufacturers Association, IPEMA, took the initiative to create a platform dedicated to showcasing the strength, innovation of not only Indian poultry equipment manufacturers, but also the other poultry sector manufacturers. Also, the other poultry related manufacturers like feed additives, vaccines, medicines, breed, and all the connected activities. Our goal was clear: to promote indigenous products, to give our manufacturers a stage to display their technology, and to ultimately benefit India's marginal and small poultry farmers. The initiative was well supported by all major poultry associations of India like NACC, CLAPMA, Poultry Federation of India, and all the major stakeholders of the poultry sector. What began humbly with just one hall of 3,500 square meters today has grown into a truly world-class event. Now spread over 7 halls covering more than 35,000 square meters area. This growth is a reflection of the confidence and collaboration within our poultry community and the trust shown by the exhibitors and visitors year after year. We are proud to share that this exhibition is the biggest exhibition for poultry in world. Other international exhibitions are mostly combining poultry, fishery, cattle, pig farming, everything. Our industry show, Poultry India, is only about chicken. We also recognized early that the poultry sector thrives on innovation and global cooperation. That is why, along with Indian manufacturers, we have always welcomed international participants, enabling valuable exchange of ideas, technologies, and best poultry practices. Our choice of Hyderabad as a venue
was deliberate and strategic. Hyderabad is widely known as the poultry capital of India. The states of Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Maharashtra, and Tamil Nadu together contribute over 70% of the India's total egg and chicken production, making it the heart of nation's poultry economy. The Poultry India exhibition is organized by IPEMA, which is a non-profit organization driven purely by commitment to the sector rather than the commercial interest. Our aim remains the same as it was in 2007, to strengthen the Indian poultry industry, empower our farmers, and project India as a global leader in poultry production and technology. I am very happy to mention that all the poultry related associations are taking active interest in this vision, and this is also well supported by Department of Animal Husbandry, Government of India. I thank all our partners, our exhibitors, and media friends for supporting this vision and making Poultry India exhibition a symbol of excellence, innovation, collaboration in the poultry world. Sincere request to all media to please give wide coverage to this yearly event with vision to promote Make in India mantra and to increase trade with many countries in poultry sector. With this, I welcome again all the media and all the dignitaries here, and we can proceed. I can request Mr. Uday, our young, dynamic president of Poultry Association, to show us what is going to be this year's event. I request Mr. Suresh, thank you sir, Anilji. I request Suresh Chituri sir to give, because I think he has a flight to go. He's specially come from Hyderabad on our request. And sir, I would first take your suggestion on, then we can move. Thank you, Uday. So bachpan se we were always going to the Atlanta show to see what is happening in poultry. And I have to say now, it's been now 3 or 4 years since I've gone to Atlanta show, because I see no need to go there because of Poultry India. This is our 17th year. Atlanta show usually was the biggest poultry show in the world. Of course, now it has included all other animals in the last few years. So it is not exclusively poultry anymore, but still, I think they have 32,000 visitors as the highest. And for sure, Poultry India has absolutely beaten that. I think if only if we can get a better way to record how many people come, because we know it's close to 45,000 now. And it is interesting that many people from farmers from Africa and all that are now choosing to come to India, because it makes more sense to come to India for them for what they want to do than going to the Atlanta show or even to the Bangkok show. So I think that, and that is my request again to the Indian media to please highlight, because it's something that we have achieved and we are proud of, and I think it is that something I think it would be great if you can also project that and let the country know what is happening. A few things I wanted to just highlight. It's been 60 years since Srinivas has been started by my father. And I was just doing a little bit of calculation on what is the impact that the Indian poultry industry has done. So as per, so an egg used to sell for 20 paisa in 1970. Today on an average it is 6 rupees. Sometimes more, sometimes less, but generally it is 6 rupees. So I was just putting what is the inflation rate from then to now and how have other products gone. So milk is supposed to be at 57, is at about 68 rupees on an average. Dal also is much higher than the inflation rate. But poultry
or eggs actually, are at, it's supposed to be at 11, supposed to be 11 rupees 50 paisa today as per inflation rate. It is 6 rupees. So I think we all have to be very proud of the service we are doing to the nation. India is now number 2 egg producer in the world. Number 3 is US. We will be adding a United States every 6-7 years. And just imagine the service it is doing to the children, to women, and all that in providing quality nutrition. And I also wanted to give you one small point. One egg equivalent, if you want to have milk, you need 185 ml, which will cost you about 12 rupees. Right? And if you actually calculate dal on the basis of digestibility and the value, then dal is costing you 16 rupees, equivalent to one egg. So there's nothing better, and that is what this is. And why am I saying this is, come to Poultry India and you will see, what anybody wants to do anything in poultry, because poultry is going to expand 4 to 5 times in the next 22 years, as India is marching towards Viksit Bharat. And so within that, huge opportunities for everyone. And especially, I would say in UP and Bihar will be the future of poultry. And I think for them to learn what to do, I think you have to come, because say exhibitions happen around the country, but nothing of the scale. The scale in Hyderabad is global, believe me. So there is nothing there, so that they can't repeat anywhere else, because investing that much money and doing it and is not going to be easy. I would say it's going to be pretty impossible to compete against Poultry India now, because that scale is very, very difficult. Like Srinivasa more or less only participates in Poultry India. We don't participate anywhere else, almost. So I think with those few words, once again, I wish the media friends to please highlight and promote, because this is what I think everybody needs to know more about. Thank you. Thank you very much for the opportunity. Anilji, thank you for giving the dice. My founder president, who has made this dream come true. We started in 2007. And Suresh sir, thank you for coming and giving your valuable time here, along with my dignitaries here. Respected press, media, my electronic media friends, and all my poultry press people who have come here. My Sridhar sir, who has come on a short notice to us, Shukla saab, and all my friends on the dice and off the dice. I would like to thank each and everyone here who has come today on this day. Poultry India, basically we used to have a curtain raiser in South India in Telangana every year. But this year, I thought that we should do it in Delhi. Because Delhi being our capital of our country, where everything, most of the decisions are taken from the central. I thought this will be a good opportunity, and all my committee members have supported me to have this in Delhi. And that's why I thank each and everyone who has taken out their valuable time here and been very patient with us to take this curtain raiser as a very good event here. So I request all the media to have a small glimpse. I made a very brief presentation. I'll not take much of the time here. So we made whatever Mr. Anil Dumal has said is the same thing I would have been said here. So let us go with the presentation. I'll take you from the highlights, which we started in 2007. Then you can see a presentation with what we stand. Poultry India is all about giving out the exhibitor and the visitor what we want here. It's a one platform, as Suresh Chituri sir said, that this is the place where any exhibitor who wants to display his product related to only poultry can have a maximum visibility. There is no show like Poultry India. You need not go anywhere in the world. Poultry India is the only one-stop solution for all your poultry needs, whether hatchery or a breeder or equipment, feed, anything which you want to buy from related to poultry. Poultry India is one-stop solution. So let's start with the small presentation here. Can we have the highlights, and then we can continue the video.
have a little volume, please? This is the 16th edition of Poultry India, which we had last year, wherein 40,000 people, visitors have come. India's poultry industry is on an extraordinary journey, evolving through stronger biosecurity, sustainable nutrition automation, and cutting-edge technologies. The Poultry India Expo, which has evolved into South Asia's biggest poultry expo, isn't just an exhibition. It's a launchpad for innovation, expansion, and global partnerships. After the resounding success of our 16th edition, where over 40,000 visitors and more than 400 exhibitors came together, we are ready to raise the bar even higher in 2025. South Asia's biggest poultry expo. Bigger, better, smarter in 2025. This year, we are expecting over 45,000 visitors with 500 plus exhibitors from more than 50 nations, all spread across 35,000 square meters in 7 world-class halls at High-Tech's Hyderabad. Yes, the sector faces challenges: volatile raw materials, sustainability pressures, disease management. And that's exactly why this platform matters: to bring the brightest minds, the latest technologies, and the most impactful solutions together. Biosecurity and sustainability are not options. They are the building blocks of tomorrow's poultry industry. Knowledge Day on November 25th is the intellectual powerhouse of the expo. Last year, over 1,500 delegates joined in. This year, we dive deeper: emerging diseases, sustainable feed, manure management, automation, and talent development. Knowledge meets opportunity. November 25 to 28, Hyderabad. At its core, the expo is about connections. It's where knowledge meets opportunity, where partnerships are forged, investments flow, and new markets open up. High-Tech's Exhibition Center in Hyderabad remains the perfect stage. 7 state-of-the-art halls, world-class infrastructure, and seamless connectivity to drive transformation through innovation, collaboration, and shared knowledge. As India moves forward, under the vision of Prime Minister Narendra Modi, the poultry sector stands at the forefront of sustainability, driving not just food security but true self-sustainability. And under this year's theme, with our industry show, Poultry India Expo, we unite the entire poultry ecosystem on one powerful platform. This expo is for everyone,
farmers, breeders, integrators, manufacturers, researchers, entrepreneurs, and students. India's poultry sector is no longer just catching up with the world, it is ready to lead. Join us at the 17th Poultry India Expo, South Asia's biggest poultry expo, during November 25th to 28th, 2025 at Hightex, Hyderabad. Together, let's लाटी साहब जो चेयरमैन हैं क्लेफमा के, वो हमारे साथ है। वेट से वेट वीआईपी से जो आए हैं संतोष जी सेक्रेटरी साहब आए सो है, नवीन साहब जो आए सो है जो हमारे ब्रीडर एसोसिएशन नॉट ब्रीडर एसोसिएशन के है, एंड देन नवीन पशुपति साहब कर्नाटका पोल्ट्री ब्रीडर फार्मर एसोसिएशन से है, अली साहब जो हमारे उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन से है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग सब एक लोग हैं, एकजुट बन के काम करते हैं। हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमने छोटा प्रयास किया है जो कि आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसी प्लेटफॉर्म से मैं आपको मीडिया को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और ये पोल्ट्री इंडिया हमें आगे आप और ऊंचाइयों पे लेके जाने का मौका दीजिए। ये पॉसिबल हो पाएगा जब आप प्रेस हमारा साथ दे और देश के उन्नति के लिए हमें आप लोग साथ दे। ये हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है, वो हम सपना पूरा करेंगे। हर आदमी, हर देशवासी अपने ये सब मोदी जी के सपने को, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के सपने को आगे लेके जाने का प्रयास करना है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी इज़ व्हाट वी वांट एक्चुअली। सो इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलने का आई डोंट थिंक आई रिक्वायर मच। Thank you once and all for coming to Poultry India, and thank you my poultry press, all of you who have come for this journey of poultry. आपके बगैर ये काम नहीं होता। पोल्ट्री प्रेस हमारे साथ हर वक्त था, हमारे हर संकट के लिए सामने खड़ा है और हम उनके ऊपर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ रहे हैं और ये पूरा डेडिकेट हम आपको ही करते हैं। हमारा जो सक्सेस है वो आपके थ्रू ही होता है। थैंक यू once again. Anil sir, Thank you, Uday. Thank you. I now request our Knowledge Day President, Dr. P.K. Shukla sir, to please give us some information about the Knowledge Day which is going to happen in this Poultry India show. Shukla sir. Good morning, dignitaries on the dais, off the dais, media partners, all the associations, those who have come over here. Indeed, the president of IPMR, he has given a beautiful narration about how we have evolved from a very small show to a world-class show as on date. And this year we are going to have our 17th edition of Poultry India. सुरेश चित्तूरी साहब ने बहुत अच्छे से बताया what is the importance of this particular sector in our country. Since media persons are here, I would like to emphasize how this poultry has been evolved since independence. Of course, we are talking about the green revolution, the white revolution, but never talked about poultry revolution, which is much more than these two revolutions. Almost 70-fold increase in production in this country, and as on date we are second in ranking, world ranking so far egg production is concerned. जर्नी रही है 2 बिलियन अंडे से लेकर के 142 बिलियन अंडे तक की। सबका समग्र विकास रहा है, सबका साथ रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खासकर इस एक्सपो की, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, सीइंग इज बिलीविंग. Expo is a place where you can go, you can see, and you can believe how you are progressing. Here, all requirements, whatever is there in your mind, you'll find in the Expo. Expo की शुरुआत में थोड़ा सा हम लोगों ने नॉलेज के एक्सचेंज के लिए एक टेक्निकल सेमिनार ऑर्गेनाइज करते थे, और टेक्निकल सेमिनार में विचारों का आदान प्रदान होता था, विचार विमर्श होता था, कुछ करंट इश्यूज़ को लेकर के, समस्याओं को लेकर के उनका समाधान ढूंढने का प्रयास होता था. धीरे धीरे
इसने भी अपना स्वरूप बदला और 2012-13 से इसको हमने रीडेजिग्नेट किया एज नॉलेज डे. नॉलेज डे where we get a spark about what we want, what are the problems and how we can get it solved. अब एज ऑन डेट नॉलेज डे हमारा जो एक्सपो है उसके एक दिन पहले होता है. इस साल ये 25 नवंबर को है. नॉलेज डे को बहुत ही स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बना दिया गया है और इस नॉलेज डे में हम नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को इनवाइट करते हैं. सबसे पहले अपनी इंडस्ट्री में हम इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि इंडस्ट्री की, फार्मर्स की, सेक्टर की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और उसके साथ उनकी क्या समस्याएं हैं. अब इस डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग एक गूगल फॉर्म सर्कुलेट करते हैं जिसमें लोग अपने अपने ओपिनियन, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस बारे में वो इस वर्ष ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारियां इकट्ठे करते हैं. उसके बाद हमारी एक नॉलेज डे कमेटी है जिसके करंटली 6 मेंबर हैं और 7वां मैं हूँ. फिर ये कमेटी मिलकर के बैठती है, उन चीज़ों की शॉर्ट लिस्टिंग करती है डिपेंडिंग ऑन मेरिट्स, कितने लोगों ने किस चीज़ को वोट किया और कितने लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें ज्वलंत समस्याएं हैं जिनके बारे में लोग सुनना चाहते हैं, और फिर उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट स्पीकर्स कौन होंगे. दैट वी आर ट्राइंग टू गेट इट वर्ल्ड ओवर, नॉट ओनली इन इंडिया, वी आर ट्राइंग टू गेट द स्पीकर्स वर्ल्ड ओवर. इस वर्ष जो मुख्य बिंदु नॉलेज डे समिति के संज्ञान में आए उसमें हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री है सबसे ज़्यादा जिस समस्या से ग्रस्त है वो है एवियन इन्फ्लुएंजा. टाइम एंड अगेन सरकार से भी बात होती रही है, इंडस्ट्री की बात होती रही है, फार्मर्स की समस्याओं पे चर्चा होती रही है, पर शुरुआत में जब हमें लगा था कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा 2006 में भारत में आया था तब हम लोग स्टैंपिंग आउट पॉलिसी से इसको समाप्त कर देंगे, और पहले 2-3 साल में इसका कंट्रोल भी अच्छा हुआ. पर अब कुछ ज्वलंत समस्याएं उसके साथ भी जुड़ गई हैं जिन्होंने इस बीमारी के प्रचार प्रसार में बहुत योगदान दिया. उन कारणों से अब ये भी कहा जा सकता है कि शायद स्टैंपिंग आउट अब हमारे लिए वे आउट नहीं रह गया है. इसलिए लोगों ने ऑल्टरनेट मेथड्स पे सोचना शुरू किया. क्या वैक्सीन को हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, क्या उन चीज़ों से बाकी के बायोसिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन के साथ, वैक्सीन के कॉम्बिनेशन के साथ इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, क्या वैक्सीन कारगर होगी, क्योंकि वायरस हमेशा अपना नेचर बदलता रहता है, परमिटेशन कॉम्बिनेशंस बनते रहते हैं. तो उन सारी चीज़ों पे अब इस वर्ष हमारी इंडस्ट्री इच्छुक थी कि इन विषयों पे चर्चा की जाए. हमने इस वर्ष इसको एक विषय के रूप में लिया है और जिसके लिए इंटरनेशनल स्पीकर्स को हमने इनवाइट किया है. दूसरी सबसे ज्वलंत समस्या जो हमारे सेक्टर की, जो सेक्टर वालों ने आइडेंटिफाई की है, वो जीएम क्रॉप को लेकर के है. मेज का और सोया का जो स्कैरिसिटी है, अनअवेलेबिलिटी फॉर पोल्ट्री फीड है और ऑल्टरनेट यूज़ इन अल्कोहल प्रोडक्शन है, उसके कारण आने वाले समय में इन 2 फीड इंग्रेडिएंट की समस्याएं हमारे देश में खासकर पोल्ट्री सेक्टर को होना स्वाभाविक है और उस पर चिंतन, विचार, विमर्श, मनन ये प्रारंभ किया गया है. तो इस विषय को भी हमने इस साल नॉलेज डे में एक विषय के रूप में लिया है कि जीएम क्रॉप हमें लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग मेज है उसका जो प्रोडक्टिविटी है या जो सीड का अवेलेबिलिटी है या जो क्वालिटी सीड का अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए. तो इस बिंदु पर भी हम इस बार जो नॉलेज डे है 25 को उस पर विचार विमर्श करेंगे. जो तीसरी ज्वलंत समस्या जो हमारे सेक्टर ने हम लोगों के सामने रखी थी नॉलेज डे कमेटी के सामने, वो थी मार्केटिंग फ्लैक्चुएशंस. हमेशा अप्स एंड डाउन पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट के साथ लगे रहते हैं. तो कोशिश ये है और सजेशंस भी आए थे कि क्या हम अपने रूरल मार्केटिंग सिस्टम को टैप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये अनएक्सप्लोर्ड एरिया रहा है. तो इस बार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि एग के लिए और चिकन के लिए क्या हम अपने जो ग्रामीण अंचल हैं, जो ग्रामीण परिवेश है, जो ग्रामीण मार्केटिंग व्यवस्था है, विपणन व्यवस्था है,
क्या उसका सहारा लेकर के इसका पेनिट्रेशन हम डाल सकते हैं? कोशिश ये भी रहेगी कि जैसे आप देखते हैं कि डेयरी के क्षेत्र में अगर डेयरी का प्रोडक्ट है तो वो गांव में भी अवेलेबल है, पर अभी अगर इंटीग्रेटेड मॉडल्स को छोड़ दें तो जो रूरल एरिया है उस पर अभी भी एग का और चिकन का अवेलेबिलिटी लिमिटेड है और सिर्फ लोकल जो प्रोड्यूस होता है वही वहाँ तक पहुँच पाता है। इसको भी इस बार हमने एक विषय के रूप में लिया है। और एक जो महत्वपूर्ण विषय था वो था कि जो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन है उसको कैसे उसकी डायनेमिक्स को समझा जाए और उसको बेहतर उपयोग के लिए और आगे आने वाले समय में उसको समयोपरक बनाया जाए, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो नॉलेज डे बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होने वाला है और इस हर वर्ष की तरह हम लोग इस बार भी एक मोटिवेशनल स्पीकर को नॉलेज डे टीम में इनवाइट कर रहे हैं। वो मैं सीक्रेट रखना चाहूँगा क्योंकि इट शुड बी सरप्राइज टू ऑल, बिकॉज उसमें हम लोगों ने हर वर्ष एक नए नए व्यक्तियों का व्यक्ति विशेषों का चयन किया है और वो आप लोगों के समक्ष रखा है। तो इस वर्ष भी एक बहुत अच्छे व्यक्ति को आपके सामने हम लोग प्रस्तुत करेंगे। की नोट स्पीकर हमारे पास होंगे जो विकसित भारत में जो मुर्गी पालन है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या हो सकती है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने सम्यक विषयों का एक बहुत अच्छा संगम रखा है इस नॉलेज डे के लिए, और जिसको सजाने संवारने का कार्य अभी भी चालू है और बहुत अच्छे तरीके से हम आपके सामने इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। और आने वाले समय में ये जो हम लोगों का प्रयास है जारी रहेगा और इस बार आपको इन विषयों पे बहुत अच्छे अच्छे वक्ताओं को सुनने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी आयोजित करते हैं और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में जो हमारे वक्तागण आते हैं उनसे अगर आपकी कोई बातचीत आप करना चाहते हैं, आप अपने प्रश्न उनके समक्ष रखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको पूरा मौका मिलता है। यहाँ मैं एक महत्वपूर्ण बात का और उल्लेख करना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पोल्ट्री सेक्टर ही है जिसके लिए एक स्पेशलाइज्ड जर्नलिस्ट सेक्शन है और वो आप लोगों का एक एसोसिएशन भी है, इंडियन पोल्ट्री जर्नलिस्ट एसोसिएशन। सब लोगों को अगर मैं ये बताना चाहूँ कि पूरे हमारा एनिमल एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री में अगर किसी के पास कोई इतना सशक्तिकरण के साथ है कि जिसके पास उसका अपना खुद का मीडिया है तो वो सिर्फ एक पोल्ट्री सेक्टर ही है। तो उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने अपने प्रयासों से इस सेक्टर को एक नई दिशा एवं दशा दी है। इस काम को आप आगे भी करते रहेंगे ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास है। और आप सभी लोगों का नॉलेज डे में और हमारे जो पोल्ट्री एक्सपो है 2025 17 एडिशन, इसमें आप सभी का स्वागत है। कोशिश कीजिए आप वहां आकर के इस शो को स्वयं देखें और स्वयं चर्चा करें, स्वयं इससे अभिभूत हों और उसके बाद फिर आप इसका प्रचार प्रसार आने वाले समय में और करते रहें। पुनः इसी आशा के साथ कि आप सभी लोगों का साथ हमें हर स्तर पर मिलता रहेगा, मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही खूबी से पूरा नॉलेज डे का विवरण किया। अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा दिव्या गुलाटी साहब को कि जो चेयरमैन है क्लैपमा इज द कंपाउंड लाइफ स्टॉक एसोसिएशन, फीड एसोसिएशन, दिव्या गुलाटी साहब। Thank you, Domal ji. Greetings to Tarun Sridhar ji, Shukla ji, friends on the dais, and a very good morning to all the people present here. First of all, let me congratulate Domal ji on starting such a brilliant movement. It is a movement you have created, sir. And congratulations to Uday ji to continue this movement. They say small things, good things come in small package. Uday ji is small but very dynamic. Yes. So, sir, two master strokes for Poultry India. One is a knowledge day.
I think I don't need to say more about Knowledge Day. Shukla ji has very well represented what Knowledge Day is. They've thought it through completely, and they've hit the nail on the head, and they're really addressing whatever the issues are current of and in the future which we could face are being addressed through this Knowledge Day. I think more than sir कितने 1000 लोग attend करते हैं approximately. On an average, 1,500 people attend the Knowledge Day. I think it's an extremely successful model. 1,500 people, yeah. 1,500. दूसरा सर आपका मास्टर स्ट्रोक है यंग entrepreneurs of poultry. वो भूल गए आप मेंशन करना कि next generation. So this is not a business of chicken and egg only. It's we are feeding the nation. We are fulfilling the deficiency of protein of this country through chicken and egg. And what best that the next generation can carry it forward. So I'm sure Dhumalji, your children, my child, all of our children have studied overseas, but have come back to India to actually carry forward this movement. So that's a big plus for our nation. Ki we're learning from outside, but applying it in our own country. And that's a fantastic thing which we can do. Poultry India is the only exhibition जिसपे पूरी stamp है Make in India की. That is the advantage of Poultry India. It's Make in India, 100%, 100% Make in India. And everyone has said so many things about and would like to endorse it that yes, it's a fantastic moment, it's a fantastic showcasing, more than 45,000 people attending, and now it's acclaimed internationally also. If you're showcasing in Poultry India, you don't need to showcase anywhere else in the world if you want to actually promote your products. And that's the level which Poultry India is going to. I'm sure, sir, in the near future, you would cross more than 1 lakh of people attending. So I would like to wish you all the best for that. Having said that, as we all know, the feed, recorded feed, the manufacturing is around 60 million metric ton, जिसमें से 40 million metric ton is purely poultry. So that is the importance of poultry. Having said that, we are very buoyant about the sector. It is growing 8 to 10%, but is it sustainable? Do we have the raw materials available to maintain this growth? I think, sir, Knowledge Day में और सब associations को इसमें एक होना पड़ेगा to think about what's it for the future. All 14 associations have got together and done a corn survey which is being headed by Naveen. So we will know the situation of the corn, kitni requirement hogi. Lot of people have projected about in 2040 or 2047, what will be the, if we continue with this pace, what will be the feed production, what will be the requirement of corn, soybean meal, and the byproducts of the oilseed industry, which is the main ingredient for our sector. So, sir, this will be a continuous effort, and I think we have to be together in speaking in a single voice, one voice, and try and address all these issues. Recently, there was a delegation of CLIFMA with all office bearers who went to US to understand how farming is done. I mean, their scale is completely another level. Hamara corn ka production hai 3.5 ton per acre. Unka hai 12 metric ton per acre. I mean, 4 गुना. अगर हमारी ये प्रोडक्टिविटी आ जाए तो फ्रॉम नेट इंपोर्टर अगर हम होने वाले हैं फ्यूचर में, हम फिर से एक्सपोर्टर बन जाएंगे. So we need to think on that also कि भाई GM crop is the answer या what is the answer. So sir, जो आप ये सागर मंथन की बात कर रहे थे Knowledge Day पे, I think it is very important. We have to keep talking about this subject and we have to keep continuing this narrative. And I would just like to congratulate Poultry India again for starting such a brilliant movement, and I'm sure media press will recognize this, and we all associations are together in this, talking for the sector in one voice. Thank you, everyone. थैंक यू गुलाटी जी, धन्यवाद. अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर रविंदर रेड्डी सर से
जो कि तेलंगाना से है, उनके बारे में, उनके एसोसिएशन के बारे में भी थोड़ी बात करें और एग्जीबिशन के लिए भी बात करें। डॉक्टर रविंदर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी, तेलंगाना पोल्ट्री ब्रीडर्स एसोसिएशन। Good morning to all. I represent Telangana Poultry Breeding Association, and this breeding association is one of the oldest associations in India in poultry. Way back in 1988, our association was formed, and the great stalwarts of Indian poultry are from Hyderabad. I am proud to say this. Padma Shri Rao Garu, B.V. Rao Sahab is from Hyderabad. Sheikh Imam Saab, Harban Singh Ji. So a lot of eminent personalities from poultry have come from Hyderabad, and we have close to 120 breeders in Hyderabad, and about 4 to 5 hatcheries are already into processing of poultry, and they are able to supply chilled and frozen chicken in Hyderabad. And Telangana has been pioneering. They have been doing pioneering work in Indian poultry and giving a lot of eminent personalities in poultry like Dr. Ramasubba Reddy, P.V. Rao Sahab. A lot of scientists have come from this university who have done before and who have been doing good work for the industry. We have close to 3 veterinary colleges in Telangana, one in Hyderabad, Warangal and Korutla. And we produce almost 650 veterinarians every year. And there have been earlier days during our times in 80s, not many people were coming into industry. But now that almost 20% of the students come to private sector. And talking about the poultry industry, I mean Poultry India that has been organized in Hyderabad, the IPMA, conducted by IPMA. We are proud to host this great show in Hyderabad. This is the largest and best show in Hyderabad being conducted. And not only from India, Asia and world over we get visitors. As Suresh Raidu sir just now said, everybody's dream is to see Atlanta show. I was visited Atlanta show 2004, 21 years back, and we thought that's the best. And this year again in 25 I visited after 21 years gap just to see. We have been claiming that everybody is saying that Hyderabad is the best. We wanted to see that. And we went all the way to US. The weather challenges are so many during that time in January. Besides that, we need to pay entry fee of close to 12,000 rupees to enter the show. And what we have already seen is that besides poultry, there are other animals, or the ducks and other species also are included. And what is relevant to us is not much there. Definitely there are good things to learn, but compared to Hyderabad, there are so many things which are not directly applicable to us. So Hyderabad, this show is the best. And coming to the contributions of our Indian Poultry Show that is conducted by IPMA, it is 100% non-profit organization. As a veterinarian, I am telling this. And more so for the poultry people, it is very good for the veterinarians also to get that exposure, and the lot of new opportunities come in for the veterinarians by attending this expo. The Knowledge Day, which I myself was the speaker some time back, so it's a great platform for the people to exchange their ideas, for networking and learning new things in poultry. Coming to the World Egg Day that we conduct every second Friday of every October in Hyderabad and all over India. VIP also has been doing a great work in this, and our Poultry India is supporting us in encouraging these World Egg Day programs all over India. And one such program we are now doing in Hyderabad, in Telangana state, in 3 veterinary colleges. All the 600 students are going to participate in this competition, because these veterinarians are the future for the poultry industry. These 600 people are going to work all over India or different places of our Telugu states. So once they understand the nutritive values of eggs and chicken, as the media people also should know that the nutritive values of egg and chicken are not very well known to the consumer. The responsibility also lies on us, and we have taken it as a utmost important thing today. And we are going to continue to work on this, educating our consumers about the nutritive value of eggs and chicken. And for this World Egg Day program, we made a special effort also to have the students' competitions to prepare posters or some kind of reels which students are going to make, they themselves are going to make, which are going to be very interesting and easy to understand for the consumers. Like
Sunday or Monday, Rose Cow Anda has become so popular. It was selected as one of the best ads in India also. So similarly, we were encouraging the youngsters, the new generations to use the social media and to make some good ads for the promotion of egg and chicken, which we will be doing next month. Thank you. Thank you, Dr. Saab. I now request Mr. Naveen Pashupati from Karnataka to speak few words. Morning to all the dignitaries on the dais and off the dais. This is a large trade show, and it's a great initiative, and 17th year, and I saw the curtain raiser on I would say it's a teaser document. What they do when Kantara wants to get released, they release a teaser document. And I said, this is like when Kantara teaser document. And Uday just laughs on the WhatsApp message. Anyway, it's a great show. For us, I come from Karnataka, and I represent the Karnataka Poultry Farmers and Breeders Associations. We're not as big as Hyderabad and AP and Telangana in terms of membership. We are about 85 members, and each member is a large operator in the state. And for us from Karnataka, it's like a picnic to go to this trade show. Really like a picnic. We send all of our sales representatives, we send all of our management team to go and interact with the other people in the sector, to go and see what technology is available in feed manufacturing, in transportation, logistics, Internet of Things, and also interact. It's a socializing platform for people from our sector, networking platform. I think a lot of things can happen. And one of the things that also happens is all association leadership team also comes to one place. And they stand across the coffee table, lunch table, dinner table. They discuss about the most important things and they reach certain conclusions. I will not get too much into the statistical data of poultry. I always want to use a word called we are animal agriculture. We really are animal agriculture. One thing I would like to make a request on this platform to the media, to the government of India is, of late when government of India is negotiating the trade deals with other countries, they are only mentioning about machwari, which is your fish farming, and they only mention about dairy. They never mention about poultry as a word. And it saddens me as a sector, because the poultry of the all animal agriculture, I stand to be corrected, is the fastest growing animal agriculture. And the cost of protein per gram in poultry is most competitive compared to aqua, lamb, mutton, and beef and pork. So we are really doing economies of scale, technology, innovations. ERP packages are rolled out in so many companies. Massive investments are happening in information technology, software, hardware. So I request the government to please put in a word called poultry whenever you talk about fisheries and dairy. And that is one request I would like to make on this platform. The second request I would like to make is, it's a great initiative by Mr. Dumal sir and Uday sir and the team organizing. I said, why are they doing this curtain raiser in Delhi? What's the intention? And then during interaction, he said, I think I spoke to ma'am also there. She said, we want antenna. We want eyeballs. So if you really want eyeballs of the government of India, I am of the suggestion that it's a great initiative. Please continue doing the curtain raiser in Delhi. But our sector, animal poultry agriculture sector, we have import-export of vitamins. So we have connections and transactions with Ministry of Commerce. Secondly, we also do a lot of import-export of raw materials depending on the supply-demand in the sector. So we need to work with Ministry of Agriculture. And obviously our mother industry.
So the next year, my feeling is a great initiative to make this, to increase the antenna of our sector and visibility of this sector and size of this sector. Maybe joint secretaries or secretaries of 3 of these ministries should be there, because I don't know if Ministry of Agriculture knows how big we are. I don't know if Ministry of Commerce knows how important we are in generating rural employment. And many of our raw materials in poultry, we pay GST. The end product has no GST. So we are actually contributing to the exchequer of the government. We are not taking a credit. Your vaccines, your animal health products, your soy, so many things we are doing. Now, insurance, many of the poultry companies are taking to their employees, though GST on personal insurance is exempted in the recent, but group insurance is not exempted. So still we pay 18% on group insurance and healthcare benefits that we extend to all the ground crew working in all the poultry companies. That's a contribution to the exchequer. So I don't think government knows how we are impacting. Digital India, see, prior to demonetization, I was telling Mr. Anil Dumal sir, when we were talking, we all grew up in poultry. People used to come to our office with belts around the waist. They used to open the belt and the cash used to drop on the table. And that's how the transactions were happening in trade. Cash transactions. You know, people used to pay in cash and we used to remit to the bank. Post-demonetization, the poultry sector has brought all the traders across India, 90% of the traders are compliant with digitization. They have got bank accounts, they have got KYC. So we are really, really making things happen. Having a policy on theory in Delhi is one part, execution, making it happen is another part. The sector has really brought in tremendous financial discipline amongst the poultry farming community, amongst the breeders, hatcheries, feed plant, raw material suppliers, traders. Entire chain is getting digitized. The transactions are all NEFT, RTGS. Everything is monitored across the digital platform. So we are doing so much. I request the press to shout loudly and request government humbly, say, please increase poultry word when you talk about anything in the press. We are also part of animal agriculture, and we are a large part of animal agriculture compared to others. So with that, I wish the trade show all the best, and we will all be there. And I hope you cross 50,000 this time. Thank you. Thank you, Naveen. Thank you very much for your encouraging words. We have a guest, Mr. Ramesh Khatri, Chairman of Poultry Federation of India, and Mr. S.P. Singh sir from VH Group. I request our President to please honor them. I would request Mr. Rajesh and Siddharth to please come on stage. I correct. Yeah. Mr. Laka. SS Laka. Mr. SS Laka. इनको ले I now request Dr. Santosh from Vets in Poultry Association to speak a few words.
audience and the reporters. Thanks, Duma sir and Uday sir for giving this opportunity. I'm Dr. Santosh Shire, representing VIP Vets in Poultry, globally one of largest veterinarian platform working in the poultry, more than 1600 veterinarians altogether. So under the leadership of our beloved President Dr. Ajay Deshpande sir, we are growing, and as a technocrat we are doing our role as like each of the association is doing their role based to contribute to the poultry. Back to Poultry India, I must say, being in India, we should have one nation, one show. And thanks for this theme to the respected dignitaries, keeping this theme for the Poultry India. Why Poultry India? Before starting, I just take 2 minutes. For anything, what we believe to the common man is a perception. And this perception or narrative is said by the you guys, the media, the important media, either it may be press media, electronic media, print media, everything. So till now, the Western world is setting the narrative through their agendas and pushing us on the world. But now it's the time for the India, the new Bharat. If the Silicon Valley is set by the Indians, why it not be done into the India? Just like that, we humbly request the media to give importance to the Poultry India, this show, and why it is important in India. I just highlight few of the facts which everyone knows. We are the globally second largest in egg production, fourth in a chicken. And the most important, we are 40 billion mouths to feed. Proudly, we are the least per gram protein cost India. So affordability is more important, and that we are giving. Approximately 17 to 20% of our children, they are underweight of the standards. And for that, poultry is important in terms of the chicken and eggs. We are providing that. Indian poultry is scientifically growing at the rate of 8 to 10%. But what's more important? The important is our growth involve approximately 80 lakhs of the employments directly and indirectly. So this is a 2.5 lakh crores of the sector which contributing majorly to our agri-business as a processing industry. So poultry consumes the 70% to 80% of the maize and 40 to 50% of the soya produced by our farmers. So all this together come under one platform, that is Poultry India. And you guys all are invited to visit Poultry India, realize what is a Indian poultry, how we are growing scientifically. It is the largest show in Southeast Asia, I would say. So the press has an important role to set the narrative, and it's time to show the strength of the Indian poultry through your eyes, through your talent, and through your pen. So really humbly request to all press media and all respective experts and the peoples from the government or any sector to visit the Poultry India show and make it another grand success. Thank you very much for giving this opportunity. And sir, this time we'll set a record for sure. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Santosh. I now request Mr. Praveen sir, Vice President of the North India Broiler Association. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आपके हिंदी में या हरियाणवी में जो भी है उसमें बात कीजिए तो और अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो जो अपने मैनेजमेंट साथी है कृपया एसी की थोड़ी गर्म करे, हमें इतनी आदत नहीं ठंड में रहने की। हम किसान लोग हैं, हमें गर्मी ही पसंद है, तो ठंड हो गई तो दिक्कत में आ जाओगे सब। तो मेरे मैनेजमेंट साथी से कृपया थोड़ी इसको एसी को गर्म किया जाए। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों को और मेरे प्यारे मीडिया साथियों सबको मेरा नमस्कार। साथियों,
आप सबको पता ही है, किसी भी बिजनेस को सक्सेस करने के लिए हमें उसमें टाइम पर सुधार करने पड़ते हैं, नए उपकरण टेक्नोलॉजी को योग में लाना पड़ता है। और यदि हम टाइम के हिसाब से उसमें चेंज नहीं कर पाए तो हम शायद आज के कंपटीशन के युग में कामयाब नहीं होंगे। तो हमें जो ये पोल्ट्री इंडिया एक्सपो है, इन सब की पूर्ति हमारी वहीं से हो जाती है, क्योंकि यह इंडिया का सबसे बड़ा पोल्ट्री का जो व्यापार मेला है और इसमें हमें नई नई जो उपकरण है, टेक्नोलॉजी है, वैक्सीन है, मेडिसिन है, सब देखने को मिलता है। और मेरी तो ये सोच है, जब भी इस तरह का कोई पोल्ट्री एक्सपो या मेला या कोई भी बड़ी मीटिंग हो तो हमें उसे एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहिए और हम सबको उसमें जाना चाहिए, ताकि हमें एक दूसरे का जो पता लग सके भाई क्या क्या दिक्कतें आने वाली है और क्या क्या हम उसमें सुधार कर सकते हैं। टाइम से पहले हमें सब वहाँ से मालूम हो जाता है। और अपना इंडिया देश बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन हमारी पोल्ट्री की एक ही लैंग्वेज है कि हम कैसे कम से कम खर्चे में अपने मुर्गियों को या अपने जो प्रोटीन है उसको तैयार कर सके और एक बेस्ट से बेस्ट प्रोटीन तैयार करके कम खर्चे में वो अपने जो समाज को उसको प्रदान कर सके, ताकि हमारा एक स्वस्थ समाज का योगदान हो सके और हम उसमें थोड़ी हेल्प कर सके। तो मेरी लास्ट में यही रिक्वेस्ट है साथियों, जहाँ तक आप मीडिया की आवाज़ जाती है, हर व्यक्ति को, हर पोल्ट्री से जुड़े व्यक्ति को इसके बारे में बताना चाहिए कि यह पोल्ट्री एक्सपो है, कोई आम चीज़ नहीं है। इसमें हमें नई नई उपकरण, नई नई मशीनें, नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिलेंगी और साथ ही साथ जो हमारे पोल्ट्री में, हमारे मुर्गी में या अपने ब्रीडिंग फार्म में कोई भी जो दिक्कत आ रही है, किसी भी बीमारी की, किसी भी कुछ चीज़ की, वहाँ अच्छी से अच्छी कंपनी आती है, अपने विचार वहाँ रखने चाहिए और अपने विचार रखकर अपने बिजनेस में सुधार करना चाहिए। तभी हम आज के कंपटीशन के युग में आगे बढ़ सकते हैं और टिके रह सकते हैं। किसी भी बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाना तो आसान काम है, लेकिन उसको वहाँ तक बनाए रखना वो सबसे कठिन कार्य है। उसके लिए हमें अपने बिजनेस में सुधार करने पड़ते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट करता हूँ सभी साथियों को वहाँ जरूर पहुँचे। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब श्रीयुत नवाब अली सर से बात करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो 2 शब्द कहें। मिस्टर नवाब अली इज फ्रॉम यूपी, प्रेसिडेंट यूपी पोल्ट्री फार्मर्स एसोसिएशन। हमारे सब साथी मंच पे बैठे हुए सम्मानित सदस्य, हमारे पत्रकार बंधु, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, जैसा कि अभी सब लोगों को सुन रहे थे हम लोग, बहुत सी बातें आप लोगों ने सुनी, नई नई बातें। हमारे शुक्ला जी ने नॉलेज डे के बारे में बताया, जो कि बहुत ही ज़रूरी पार्ट है, जो भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करेंगे, कोशिश करेंगे। हमारे नवीन जी ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए, आप लोगों ने सब सुने, बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातों को सुन के। हम लोग यूपी उत्तर प्रदेश पोल्ट्री फार्मर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे अभी बहुत गुंजाइश है पोल्ट्री की और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफ़ी मदद मिल रही है। इंटरेस्ट सब्सिडी है, 30,000 बर्ड के यूनिट लगाने पे करीब 40 लाख रुपए की इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती। अभी हम लोग जो जितनी यूपी में ज़रूरत है अंडे की, उसका मेरे ख्याल से 50-60% ही हम लोग वहाँ कर रहे हैं, बाकी सब दूसरी जगह से आता है। बाकी पोल्ट्री इंडिया जिस तरह से काम कर रहा है, हम लोग हमेशा उनके साथ जुड़े हैं और हमें कहते हुए बहुत अच्छा लगेगा कि हमें वहाँ पोल्ट्री इंडिया का जो प्रेसिडेंट मिला है, एक स्मार्ट और हैंडसम और बहुत ही एक्टिव, तो हम हमेशा एक यकीन दिलाते हैं, आप हमें जब भी ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। पोल्ट्री इंडिया का हमेशा साथ रहेंगे, पूरी एसोसिएशन हम लोगों की साथ रहेगी। इसी के साथ बहुत लंबे दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि बहुत लंबी चौड़ी तकरीर की जाए, तो हम इसलिए आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे कि आप लोग पोल्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करिए कि जब गवर्नमेंट तक बातें पहुंच सकें। बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे अभी आपका
एग्रीकल्चर में आता है, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो कमर्शियल रेट पे मिलती है, जबकि वो एग्रीकल्चर किसान रेट पे मिलना चाहिए। सब बहुत सी बातें सब छेड़ेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर हो जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया पोल्ट्री इंडिया का, जो सबको हम लोग को इनवाइट किया, और आपको यकीन दिलाते हैं कि हम लोग नवंबर वाले नॉलेज डे से लेकर सब तक वहाँ मौजूद रहेंगे, अपने और साथियों के साथ भी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। पोल्ट्री इंडस्ट्री, मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से 1979 से जुड़ा हुआ हूँ। उस टाइम का जो लेबर था, फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर 8 घंटे में काम करने के बाद उनको 3 या 4 रुपया मिलता था। 79 का स्टोरी है ये। आज वही फैक्ट्री का आदमी कम से कम 700 रुपया लेता है। यानी कितने गुना इन्फ्लेशन हो गया है। और हमारा अंडे का रेट या चिकन का रेट जो है वो कितना बड़ा है। 79 में वो रहता था 16 रुपया किलो, अभी जो है वो 100 रुपया किलो तक पहुंचा है। यानी हम लोग खाली 8 गुना बढ़े हैं प्राइस में, जबकि इन्फ्लेशन जो 4 या 5 रुपए का आदमी था उसको 700 रुपया देना पड़ता है अभी। यानी वो कम से कम 100 गुने के ऊपर बढ़ गया है। और हमारा पोल्ट्री और चिकन कितना बढ़ा है? बहुत ही कम बढ़ा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा इफ़िशिएंट बन गए हैं और हम लोग प्राइस इतना अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं। और प्रोटीन का जो कॉस्ट है चिकन और अंडे का, वो सबसे कम है कंपेयर टू अदर सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये सब होने के बावजूद भी हमें आज ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे हमारा जो वजूद रहना चाहिए वो बहुत कम है। हमको बहुत कम मान्यता मिल रही है। और इसी पॉइंट को लेके मैं तरुण श्रीधर जी से अभी बात करूंगा कि वो हमको समझाए कि हम कैसे हमारे सेक्टर को गवर्नमेंट के नज़र में ज़्यादा अच्छी तरह से ला सकते हैं, और गवर्नमेंट जो भी कर सकती है हमारे सेक्टर के लिए वो कैसे करें। Tarun Sridhar ji, he has worked in Government of India. He is IAS retired, and he was also heading Secretary of Annual Veterinary Department, Government of India. And his words and advice and guidance will definitely help all of us. Thank you so much. Good morning, everyone. See, I am not from the poultry sector, so I will be giving my very independent observations. We are interacting with the media today, and I think after you've heard the speakers before me, there should be a lot of questions in your mind. Why am I here? I retired from the government more than 6 years back. But for the last 6 years, somehow I developed the passion for the entire animal husbandry sector, which includes poultry and also fisheries. Because I found when I was in government that the level of awareness and knowledge about the entire livestock sector within and outside the government is very poor. In fact, in all sections of society, there is very little awareness about how important the entire animal husbandry, or as you call it, animal agriculture sector is. The speakers before me have highlighted certain figures, etc. I would like to reiterate some of them. You see, except for some journals dedicated to poultry or livestock sector, you don't find mention of poultry in any mainstream publication or media, except when there is an outbreak of bird flu. And that is the time we don't want media attention, because that gives negative publicity and causes a lot of damage to the sector. Further, I find that almost 100% of news and analysis about avian influenza, or as we call it in common parlance, bird flu, generates a lot of unnecessary alarm and misgivings about the sector, thus putting an obstacle to the growth of this sector. Friends from the media, please note,
I can say it with great confidence that Indian poultry is one of the biggest success stories of independent India. Mr. Shukla had quoted certain figures. I'll give you the exact figure. In the year 1950, the total egg production was 1.83 billion. Today it is more than 142 billion. Again, please, just visualize this. 1.83 billion when we became independent, 142 billion today. From the bottom in the production chain in the world, we are at the top now, number 2 in the world. 5 million tons of poultry meat per annum. The last state was 5 million tons. 4th in the world as far as poultry meat is concerned. The total value of the poultry output last year was more than 2 lakh crores. Sir, 2 lakh crores is not a small figure just for the poultry sector. And more than 15% of the value of the entire livestock, which comprises a huge dairy, comes from poultry. This is how important poultry is. Now, how is poultry different from the rest of the livestock sector is that poultry is the only subsector of the larger agriculture sector in this country which is organized. Our agriculture is characterized by small and marginal farmers, characterized by mere livelihood, hand-to-mouth existence, but poultry is a sector which has got industrialized, vertically organized, and it competes with the best in the world. So therefore, I would request the media that while you cover the larger agriculture sector, please consider that poultry stands apart. And in fact, the agriculture sector, which includes animal agriculture in this country, would do well by emulating the model of the growth of poultry in this country. And that is when we will actually usher in an area of our agriculture becoming very productive as also very progressive. Against this background, now let us come to what is Poultry India. The media which is stationed in Delhi would be exposed to several big expos and fairs being conducted in Bharat Mandapam, national and international level. So you may be thinking that, well, we have been seeing what happens in Bharat Mandapam. Why go all the way to Hyderabad to see it? Now, from my own experience, I can say that Poultry India stands apart. And the benchmark which the Poultry India has set up in the way an expo should be conducted is out of the league. And I would say that it would actually compete with the best of expos in the world. Mr. Suresh Chitturi was mentioning about Atlanta. Please go. I urge everyone to go and visit Hyderabad and see how professionally expos are conducted and how purposeful an expo can be. It is not just a tourist activity that you go and visit and see. It is conducted with a sense of purpose and actually contributes to the growth of the sector. Speakers before me belong to the sector, so they would have praised Poultry India. I am totally an independent observer of this whole thing. That is why I can say with great degree of confidence that there is no better expo in this country than Poultry India. And I myself feel privileged to be part of the Knowledge Day of Poultry India. Thank you, ladies and gentlemen, and I would urge the friends from the media to please ask as many questions from the gentlemen sitting here, including me, as is possible. And more embarrassing and more difficult the questions are, better it would be. Thank you so much. Thank you, sir. I now keep the stage open for all the question and answer. Whatever points you have or you want the clarification, you can always ask. And we are all here from different You want to ask? Please. Yes. Mic is.
आई एम संतोष मेहता, आई एम ए सीनियर जर्नलिस्ट. सर, आई वुड लाइक टू नो कि ये जो पोल्ट्री आपका वर्ल्ड एक्सपो है, ये हैदराबाद में है, लेकिन अगर भारत मंडपम में करते तो हम लोग अटेंड करते. और दूसरा ये कि जो कर्टन रेजर आपने किया वो बहुत अच्छा है, बट आई वुड लाइक टू नो कि ये जो दिल्ली में हम देखते हैं अपने आसपास में पोल्ट्री वाले ये जो बेचते हैं, मतलब है ना, तो वो बड़े ख़राब कंडीशंस में इनको रखते हैं. तो क्या उनको कोई मतलब ऐसा बेटर अरेंजमेंट हो सकता है कि वो कुछ अच्छा करें? वो तो बड़ी स्मेल आती है, वो बड़े ख़राब कंडीशन में, उनको कुछ पानी वानी कुछ नहीं होता है. तो आपके हिसाब से आप कुछ सुझाव दें कि क्या होना चाहिए. हेलो मैडम, हम सरकार के साथ इस बात के बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं. हमारे देश में एक कल्चर है, अब हम फ्रेश चिकन लेकर आएंगे, हम स्लाटर हाउस का चिकन नहीं खाएंगे जो गवर्नमेंट अलाउ करती है. तो ये जो रोड पे बेचते हैं ना, इसको फ्रेश मानते हैं. हमारी मेंटलिटी ऐसी है, ये हमारा दोष नहीं है, हमारी मेंटलिटी ऐसी है अब ये फ्रेश है, जबकि वो फ्रेश नहीं होता. फ्रेश प्रॉपर तरीके से चिकन ड्रेस होकर नहीं आता वो, लेकिन हमारी मेंटलिटी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं. थैंक यू सर. सर, मैम, आई नीड टू ऐड वन कनेक्टिंग. Live is not fresh. Live is not fresh. I got nothing more to say. मैम, आपका एक क्वेश्चन था ना, भारत मंडपम में क्यों नहीं करते. See, industry has to go, the sector has to go where the people are, the users are. दिल्ली में कोई यूज़र है ही नहीं, सारे बेसिकली साउथ सेंट्रिक हैं, तो इसलिए हैदराबाद में रखा गया है. एंड आई वुड टेंड टू एग्री, थोड़ी सोच बदलनी पड़ेगी कि ये जो मार्केट में मिलता है वही फ्रेश है, वही लाइव है. तो थोड़ा सोच का फ़र्क है, सोच बदलोगे और प्रोसेस चिकन जो फैक्ट्री में बनता है वो लाइव है और फ्रेश है, वो खाओगे तो फिर ये स्मेल भी नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगा. तो सोच का विचार है. और परहैप्स भारत मंडपम में जगह कम पड़ेगी, क्योंकि हम लोग 6 फुल हॉल्स का इस्तेमाल करते हैं. क्यों? 7. शुरुआत की थी 1 से, हर साल एक बनता गया और अभी 2-3 टेम्परेरी हॉल बनाना पड़ रहे हैं. 4 टेम्परेरी हॉल बना, तो इट्स अ वेरी बिग शो. सो स्पेस कंस्ट्रेंट भी है. एक या तो ये स्टार्ट हुआ, बाहर दूसरे देश में ये एक्सपो होते थे, इंडिया में छोटे होते थे लेकिन सक्सेस नहीं होते थे. जो मैन पोल्ट्री इंडिया ने की है ना इंडिया में, ये एक्सपो को ऊपर तक ले जाने में, शायद ही कोई करता. हम उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत से इस शो को ऐसा ये लेवल दिया. One more thing, Hyderabad connectivity is so good that ORR say Hyderabad, because of the ORR, airport say any part of Hyderabad is 1 hour, and our Gachibowli, our venue is just 30 minutes from the airport. One of the top cities में Hyderabad is the only place in India which has got such accessibility and easy to reach. एज ए प्रेसिडेंट मुझे बोलने का मौका नहीं मिला. थैंक यू सो मच. देखिए हमारा टीम, हमारा एकता ये है, हम डिफरेंट स्टेट से है, जोन से है, एंड हमारे लिए इतना प्यार और रिस्पेक्ट है हमारे एसोसिएशंस को. थैंक यू. आई नीड नॉट टेल एनीथिंग मोर देन दिस. Uday sir, ma'am, I just need to answer your question. I come from Karnataka and South. I don't know the practices in this part of the country. So to answer your question about dirtiness, smell, and very gruesome visibility of this is, we the associations in South are calling the trading community and lifting community and educating them how to handle the birds. Now, if you look at, I'll just add, it's a process. It's a very large sector, ma'am. It's a very large sector. It's not Monday morning, we cannot reform this sector. Okay, it takes time. Now, I'll give you one example. The birds were transported in metal cages, right? And the birds used to get injury, right? We in the association in South requested the trading community and transportation logistic community start using plastic cages. So it's a lot more comfortable.
And we also tell the trading community to control the biosecurity, wash their vehicles before they go to the farm. And after they unload, they again wash the vehicles. So this increases certain amount of dignity of the profession. Visibility becomes better. We are doing this in Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, and I'm sure certain parts of Andhra Pradesh, the associations are taking this initiative to professionalize this logistics and transportation of live birds. To answer the other questions, I request the consumers to start supporting processing sector, right? Now, the minute you start supporting processing sector, the live animal butchery shops in the city will drop, or they will modernize with certain amount of hygiene and conditions in their shops with tiles, glasses, ventilation systems, so that the women and children can go to the live animal butchery shops to buy the product. I don't see any women and children going to live animal butchery shop because it's gruesome. So we, the sector, want to ask the consumers to support processing sector. We will process at one place, we will handle the solid waste and liquid waste most scientifically. We will not dispose it because we all come under pollution control board. We are a red category. You cannot run a slaughterhouse without getting the PCB approvals. Please, consumers, support processing. Please, consumers, support processing. Thank you. So myself, Lakshmi from PTI. Yes. There is concern about raw materials, and US and India is negotiating on tariff related issues, and US has imposed 50%, and it is very keen to push soya, GM soya. I just want to understand what's your take on this, because the industry has a huge requirement of feed. Should, how the thing should be, and what are your views on this? Hello. You're right, there is trade negotiation going on between India and the US. As I mentioned earlier, Cliff delegate was just there in the US. So we have experienced, you see, the US farmers are losing money, a lot of money, because China has stopped buying. So they're in a desperate situation at the moment. They need to sell somewhere. We visited the farms there. Farmers are losing money badly. So we are assuming that the trade deal will be struck soon. They are not trying to promote soya bean. They are trying to promote soybean meal, not soybeans. Soybeans is GM. Soybean meal is non-LMO, non-living modified organism, so you cannot germinate a meal if you plant it also. It's a quality product. We've earlier also imported the product into the country, so there is no harm if a quality product comes in, there is no harm in importing it because we've done it earlier also. But as of now, we have excess production of DDGS in the country, especially from rice. Around 5.2 million metric ton of rice has been diverted for ethanol production. So the byproduct coming out of it is rice DDGS, which is high in protein. And that's what is replacing soybean meal also. So currently we are self-sufficient, but if this is the rate of increase of the poultry sector, then we might fall short of raw materials in the future, as we are facing a situation with corn. I hope that answers your question. Yeah, but you're okay with if, the GM soya meal comes to India? As I explained to you, it's not GM soya meal because we are already importing. Yeah. We are already importing oil. Yeah. You know that, right? Yes. Soybean oil. Yes. It's the same process. Okay. GM soybean meal. There is no difference between the soybean oil and the GM soya meal. Okay. Both are non-LMO. It cannot. So it is not. It is produced from genetically modified seed, but it's not GM anymore. Okay. Thank you. Yeah.
सर मॉर्निंग सर, समय समय पर बहुत सी बीमारियां मुर्गी फार्म में आती रहती हैं। इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू है और इंक्रोसिस जो भी है, काफ़ी तरह की बीमारियां जो समय पर आती हैं। लेकिन जब भी इसकी रिपोर्ट आती है तो ये कहा जाता है कि ये बीमारी बाहर से आई है, लेकिन आप कहते हैं ये क्योंकि ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है मुर्गी फार्म, कहीं ऐसा उसमें कहीं ऐसा भी टारगेट नहीं कि बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर पे आ रहा हो, लेकिन उसकी जो अचीवमेंट है वो एक सीमित रहती है। लेकिन फिर भी यही समय समय आती है, बीमारी का यही इश्यू रहता है कि वो बाहर से आई है और वो ऐसे पोल्ट्री फार्म पर वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है। उसको रोकने के लिए आप किस तरीके से कदम उठाते हैं? Doctor sir, what is the exact question? Okay. So time to how to control it. Okay. Okay. आप जो बर्ड फ्लू की बात कर रहे हैं, सभी बीमारियां अक्सर ये होता है कि वो कह दिया जाता है कि बाहर से आई है, लेकिन होता क्या है कि आप कह रहे हो कि अभी यही आप कह रहे हैं कि हम बहुत सिक्योरिटी रीजन पे रखते हैं, बहुत सफाई सुरक्षा रखते हैं, लेकिन और रिपोर्ट ये होती है कि वो बाहर से आई है। ऐसा क्यों? हाँ जी, जैसा आप कोविड भी देखा है, प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमंस एंड पोल्ट्री, प्रॉब्लम चैलेंजेस तो रहेंगे। विदाउट डिसीज तो कोई पोल्ट्री नहीं चलेगा, डेयरी नहीं चलेगा, ह्यूमन बीइंग हमारे बारे में भी डिसीज प्रॉब्लम्स आते रहेंगे। मगर पोल्ट्री इतना एडवांस्ड है, आपको बोलने में हमको कोई ऑब्जेक्शन कोई डाउट नहीं है कि जितना साइंटिफिक लाइन्स पे पोल्ट्री चल रहा है, आपको हम एक्चुअली बताना चाहिए। वी कैन टेक यू टू द फार्म्स एंड शो यू। पोल्ट्री में इतना एडवांस्ड है, आप TQM बोलते हैं, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बोल के वर्ड होती है पोल्ट्री में। फीड, वाटर एंड जो शेड का सराउंडिंग्स इतना नीट मेंटेन करना पड़ता है कि डिसीज़ कम आए, क्योंकि लाखों में बर्ड रहता है। हम डिसीज़ आने से कोई फार्मर हैप्पी नहीं रहेगा, प्रॉफिट नहीं बनाएगा, एकदम हेवी लॉसेस होगा। सो कोई नहीं चाहता कि कोई डिसीज़ आए फार्म पे। सो उनका परफेक्ट मैनेजमेंट होता है। आपके जैसा हम ह्यूमन बींग्स हम अपने बारे में इतना नहीं सोचते कि जो हम डेली खाना चाहिए, कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना वाइटामिन रिक्वायरमेंट है, हमको खुद नहीं मालूम। मगर मुर्गी के बारे में हमको माइक्रोग्राम लेवल पे मालूम है वाइटामिन कितना चाहिए। जैसा बायोटिन वैसा वाइटामिन है, माइक्रोग्राम में रिक्वायरमेंट रहेगा उसका। हमारा फार्मुलेशन कंप्यूटर पे बनती है और ऑटोमेटिक बैचिंग भी होती है, मैनुअल भी हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे वेइंग करके फीड बनती है। वाटर सैनिटेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको भी मालूम है, वाटर क्वालिटी नहीं है तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में मुर्गी या आदमी पिएगा वाटर ही होगा। सो वो सबसे चीप है, सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट है पोल्ट्री न्यूट्रिशन में। सो ये वाटर का क्वालिटी एवरी मंथ वाटर टेस्टिंग कुछ आता है। हमारा घर पे हम कभी वाटर टेस्टिंग को बेचते नहीं है। हमारा ओवर टैंक या हमारा सम्स कितने बार क्लीन करते हैं हमारे को मालूम है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट पोल्ट्री का कंपैरिजन में बोल रहा हूँ आपको। एवरी मंथ वाटर टेस्टिंग कुछ आता है लैब के लिए। उसमें जो इकोलाई जैसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहना है, बैक्टीरिया नहीं रहना बोल के चेकिंग होता है। वो बैक्टीरिया है तो उसका सेपरेट हो जाएगा। जो हमारा जो 4 बोरवेल्स है फार्म पे, चारों की टेस्ट होगी, जो सबसे सेफ है वो यूज़ करते हैं। और एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज सैनिटाइज्ड। हम एसिटिक एसिड जैसी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो pH कम करने के लिए। जब वाटर का pH आपको 5 to 6 पे आएगा, आपको ये वाटर बॉर्न डिसीज नहीं आएंगे। सो उसके लिए एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, आप बिलीव नहीं करेंगे, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर यूज्ड इन पोल्ट्री सैनिटाइज्ड एंड डिसइंफेक्टेड। सो इतना केयर लेने के बाद ये पोल्ट्री, अब जैसे स्पीकर से पहले भी बोल चुके हैं कि पोल्ट्री का प्राइस इतना कम पड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा नहीं है जो कंपेयर टू इन्फ्लेशन इन इंडिया, फिर भी ये पोल्ट्री सर्वाइव होती है ओनली बिकॉज ऑफ गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। सो डिसीज जैसे बर्ड फ्लू आया तो उसका वर्ल्ड ओवर है, आपको ये भी मालूम होगा ऑलरेडी, जैसा आप पेपर में पढ़ते हैं। बर्ड फ्लू इज देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया में भी है। इस साल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आया है बिकॉज दैट इज द नेचर ऑफ द वायरस, इट कीप्स म्यूटेटिंग। हम वैक्सीन करे भी प्रॉब्लम है, नहीं करे भी प्रॉब्लम है। पहले जैसा शुक्ला साहब बोले हैं, हम स्टैंपिंग आउट करते थे पहले, वो ये साल में स्टैंपिंग आउट करने के बाद भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आए हैं। सो अभी वैक्सीन के बारे में भी डिस्कशन हो रहा है। ऑफिशियली हमारा 2 वैक्सीन होती है, लो पैथोजेनिक की, हाई पैथोजेनिक की। बर्ड फ्लू की 2 वैरायटी होती है। लो पैथोजेनिक की ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परमिशन दिया है, अभी हाई पैथोजेनिक का परमिशन भी लेना चाहते हैं, वैक्सीन करके भी चेक करना पड़ेगा। बट मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ, पोल्ट्री जो आज साइंटिफिक बेस में चल रहा है, कोई भी लाइफ स्टॉक ऐसा रेयरिंग नहीं होता है। एग्रीकल्चर फार्मर को तो और ही कंपेयर टू पोल्ट्री बहुत ही बैकवर्ड है उन लोग। हमारा एकदम साइंटिफिक लाइन पे चल रहा है। हमारा को भी चैलेंज जैसे एक ही चैलेंज हमारा है, हमारा कंज्यूमर को नहीं मालूम हमारा पोल्ट्री का वैल्यू क्या है। अंडे की रेट आप लेंगे आज 25 रुपये का वैल्यू अंडे का 6 रुपये में हम सेल कर रहे हैं। सो एक रीज़न है हमारा भी है, आप मीडिया का भी हेल्प चाहिए कि इसका इंपॉर्टेंस बताने के लिए। अब अंडा खाने के लिए जब हम बात करते हैं, डेली 1 अंडा खाने में भी डर लगते हैं लोगों को।
और मेडिकल डॉक्टर्स भी अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं कि डेली वीकली एक अंडा लीजिए या 2 अंडा लीजिए. We have got live examples where people have taken 15 eggs per day, and in our own community or even non-poultry वाले daily 6 eggs breakfast में खा के उनका lipid profile Instagram में regular post करते हैं, and we will challenge this. And ऐसा industry कोई दूसरा नहीं है इंडिया में जो इतना excellent nutritive value है, so eggs and chicken आपको supply कर रहा है. Disease और एक बार conclude करता हूँ मैं, in spite of taking all the care, disease challenges रहते रहे आएंगे, future में भी रहेंगे, and we are well equipped for that. ओनली थिंग थोड़ा गैप किधर आता है, वैक्सीन का परमिशन आने में थोड़ा हमको टाइम लग जाता है. एंड डेफिनेटली वी वांट मीडिया हेल्प इन गेटिंग दिस परमिशन फॉर न्यू डिसीजेस एज वेल एज जीएम सोया एंड मेज का भी जैसा शुक्ला साहब बताया, इट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट डिस्कशन नेक्स्ट 2 years. एंड वी वांट सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट अस टू ग्रो जीएम सोया एंड मेज इन इंडिया, बिकॉज यू नो इन कंट्रीज लाइक ब्राज़ील एंड यूएसए उनके पास मेज एंड सोया का रेट 60% कम है. हमारे पास 60% ज़्यादा रख के भी हम ये कम्पीट करना बहुत मुश्किल हो रहा है. सो ये डेफिनेटली डिसीज़ के बारे में अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस हम लेंगे, हम केयर लेते रहेंगे. लेकिन सर एक अभी आपने ऐड की बात बताई, संडे टू मंडे रोज का अंडे, लेकिन वो ऐड काफ़ी दिन से बंद हो गई है, अब आती नहीं है. वो पॉपुलरिटी थी लेकिन अब बंद हो गई है. लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि आप ये बताएं कि जो पोल्ट्री फार्म में है, बहुत डेवलपमेंट के लिए इतना डाइट, इस तरीके की डाइट दी जाती है कि आप प्रोटीन्स की आप जो इच्छा गवर्नमेंट कहती है, जो आप कह रहे हैं कि हम प्रोटीन देते हैं, वो प्रोटीन शायद अब वो अंडों में नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी फास्ट डेवलपमेंट के लिए उतने डाइट इस तरीके की दी जा रही है उनको, मुर्गियों को, और वो नहीं हो पाती है किस तरीके से आप कह रहे हैं कि प्रोटीन भी आप देते हैं. सर हेलो, इसी बात के लिए यूपी में कोई मीडिया वाला ने नकली कोई डॉक्टर बना के लेके गए, ये इंजेक्शन लगाने से इतनी ग्रोथ होगी. हमने उसको चैलेंज किया था, कोई सामने है भाग गए सब. ये जो मीडिया प्रेफरेंस है ये गलत है. ऐसी कोई डाइट नहीं है अगर जो ग्रोथ बढ़ा दे और प्रोटीन अवेलेबल ना हो उसके अंदर, ऐसी कोई भी नहीं है. वो आप भी साइंटिस्ट को लेकर और किसी फार्म पर ट्रायल करके दिखाइए, फिर हम आपकी बात मान लेंगे. ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर. ऐसे कोई ग्रोथ प्रमोटर नहीं है. हाँ. और ग्रोथ प्रमोटर देने के लिए जो हम सोचते हैं कि ह्यूमंस में अगर कोई दवाई लेंगे तो बॉडी बहुत अच्छे बनती है, मसल बिल्डअप होते हैं, ऐसे बात पोल्ट्री में नहीं है. पोल्ट्री का संख्या जो है लाखों में है, उतना डोज देने के लिए पैसा ही नहीं है पोल्ट्री वालों के पास. ये हो ही नहीं सकता, ये लॉजिकली नहीं है कि उसको कोई ग्रोथ मेडिसिन दे और उसका ग्रोथ जल्दी हो जाए. ये ऐसा कुछ नहीं. ये जो भी पोल्ट्री का चेंजेस हुआ है वो पूरा जेनेटिकली मॉडिफाइड हुआ है. अभी देखो 100 साल पहले इंडिया से चिकन और गाय बाहर का देशों में एक्सपोर्ट हो गया, ब्रीड लेके गए वो, और वहाँ उन्होंने रिसर्च करके ब्रीड अच्छा बनाया. अभी गिर का जो गाय है कैटल का, वो ब्राज़ील वालों ने लेके गया और उनका अपने यहाँ का प्रोडक्शन से उनका एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा प्रोडक्शन है. वो उन्होंने वैसा मॉडिफाई किया उनको. वैसे ही जो जंगल फाउल जो बोलते थे हम लोग, जंगली मुर्गी, उसको लेके गए और उनको ब्रीड बनाए उन्होंने, और वो अभी सब ऑल ओवर वर्ल्ड में जा रही है. तो उसमें जो भी पॉसिबल है जेनेटिकली करने का उन्होंने किया है. कोई कमर्शियल फार्म में कोई ग्रोथ प्रमोटर ऐसा कोई इशू नहीं रहता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है. ये गलत फहमी है. और एक गलत फहमी मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ कि जो अंडा हम लोग खाते हैं, टेबल एग्स, वो वेजिटेरियन है क्या नॉन वेजिटेरियन है, उसके अंदर लाइफ है क्या नहीं है. जो भी अंडे हम लोग खाते हैं उसमें लाइफ नहीं रहता है, क्योंकि वो अंडे जहाँ से आते हैं वहाँ खाली मुर्गी ही रहती है, वहाँ मुर्गा रहता ही नहीं है. केजेस में रहते हैं पूरे फीमेल्स, पूरा मुर्गी हेन्स जो है केजेस में, और वो रूटीन कोर्स में वो अंडा देती है. तो उनका ओवरीज इतना अच्छा बनाया उन्होंने जेनेटिकली रिसर्च करके कि वो रोज एक अंडा दें. अगर उसमें मुर्गा रहेगा और अगर मीटिंग होती है तो ही अंडा फर्टाइल होता है, अदरवाइज अंडा फर्टाइल नहीं होता है. हमारे जो भी कमर्शियल एग जो मिलते हैं उसमें लाइफ नहीं रहता है. इट इज़ जस्ट लाइक अ मिल्क, इट इज़ एन एनिमल प्रोडक्ट. जैसा मिल्क है एनिमल से आता है, जैसा अंडा है एनिमल से आता है, तो उसमें लाइफ नहीं है कुछ. ये बहुत बड़ी एक गलत फहमी है
धुमाल साहब, एक ही उनका डाउट है, मैं ये just, fast just growth to क्यों? add बोलिए, just to बोलिए, add what he said, just for the knowledge of some of you may not be knowing, in the year 1942 Mahatma Gandhi wrote a monograph called Key to Health. 1942 Mahatma Gandhi wrote a monograph called Key to Health, in which the Mahatma Gandhi writes, a sterile egg does not develop into a chick, so it is not flesh. Any person who consumes milk should have no objection to consuming egg. So the vegetarianism of egg is established, and a person no less than the father of the nation has also endorsed it. आखिरी बात है, आखिरी बात जो आपको साहब ने पूछा था कि फास्ट ग्रोथ कैसा आता है। जैसा अभी देखिए 1970s में जो हमारा टाइम पे 7th क्लास में जो कॉमन एग्जाम हो, पहले तो पास होते थे एवरी क्लास, वो ज़माने में 50 में एक बच्चा पास हुआ तो बहुत बड़ी बात था, एंड उसका परसेंटेज क्या था, 36% था। आज कैट एग्जाम में my own daughter got 99.6. She only got interview in Calcutta, but not the seat in this ABC. Only in Lucknow they got that job. So there is a level of competition. हम जब शादी करते हैं हमारे बेटी का 4 जनरेशन 5 जनरेशन देते हैं कि उनका परफॉर्मेंस, उनका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उनका कैरेक्टर क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। सिमिलरली पोल्ट्री जेनेटिक सिलेक्शन ऐसा है कि 50 साल से सिलेक्शन हुआ गया है, पूरे वर्ल्ड में से बेस्ट ब्रीड्स का सेलेक्ट हुआ है। उसमें जो अंडा ज़्यादा देता है उसको लेयर डेवलप हुआ है, जो फ्लैश ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग उसको ब्रायलर डेवलप हुआ है। इट इज़ अ वर्क ऑफ जेनेटिसिस फ्रॉम लास्ट 60 to 70 years in the world, not in one country, and with the genetics, nutrition and management, इन 3 चीज़ इकट्ठा करने से ये परफॉर्मेंस आया है। जो बच्चों को आज 99.9% मार्क्स क्यों आ रहा है, उनके देखभाल हम कर रहे हैं, उनको क्लोज बेस्ट स्कूल में दे रहे हैं, बेस्ट न्यूट्रिशन दे रहे हैं, बेस्ट केयर दे रहे हैं, उसके लिए उनको 99.9 तक पहुंचा है। सिमिलरली पोल्ट्री भी वही एग्जाम्पल है, सब आइडियल रखने से ही होता है। थैंक यू। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या न्यूट्रिशन वैल्यू का ईट खाना खाते हैं? आपको मालूम है? नहीं मालूम, मेरे को भी मालूम नहीं है, नहीं मालूम ना। लेकिन पोल्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, कितना अमीनो एसिड, कितना प्रोटीन, कितनी एनर्जी, कितने विटामिन देने चाहिए फीड में। सिर्फ पोल्ट्री एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती है, इसलिए वो ग्रोथ आती है। देखिए अंडा, इट इज़ अ स्टेराइल एग। वो जो अंडा है वो अंडा चूजे में नहीं बनता, वो स्टेराइल ही रहता है। अगर वो फर्टाइल होगा तभी वो नॉन वेजिटेरियन होगा। तो ये जब तभी मैंने महात्मा गांधी के मोनोग्राफ से कोट किया था 1942 में, जो उन्होंने कहा था कि अंडा जो स्टेराइल है जब तक वो फर्टाइल नहीं होगा, जैसे उन्होंने कहा केवल मुर्गी रहती है, देयर इज़ नो मेटिंग इन्वॉल्व, सो देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ लाइफ। तो इसलिए अंडा जो है ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है, और महात्मा गांधी ने यही कहा था कि जो दूध पी सकता है वो अंडा भी ग्रहण कर सकता है। There is no blood cells in the egg, first of all, very clearly. Good afternoon. I am Raghav Khosla from Exhibition Showcase. First of all, thank you for giving us an opportunity to cover this important press meet. Uday sir, Radhika ji, thank you. My question for this event is that, Poultry India has been instrumental in putting India on a global stage in the poultry industry. Now, what is IPAMA's vision of maybe say 2030, some measurable goals or some key highlights that you have made for reaching a global stature by the year 2030 for this industry? Thank you, Mr. Kushla, for coming all the way. And as you see that Poultry India is a non-profit organization. We don't have any profits. Whatever profits we get out of Poultry India exhibition is surplus. We again give it back to the industry. No other exhibition or no other associations does that. Proudly I can say Poultry India does that. Whatever surplus जो हम कमाते हैं वो इंडस्ट्री को देते हैं। वही पैसों से, जैसा अभी ये जो नेगेटिव मार्केटिंग की बात हो रही है अंडे के बारे में, चिकन के बारे में, पोल्ट्री इंडिया अभी वही प्लेटफॉर्म से एड्रेस करेगा कि ये नॉन फर्टाइल एग है और इसके ऊपर हम लोग इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसको वेजिटेरियन सेक्टर में ले सकते हैं। ऐसे ही कई जो हमारे मिथ्स है जो लोग सोच के चलते हैं उसका क्लियरिटी देगा। पोल्ट्री इंडिया अब स्पेसिफिकली एक नंबर डेडिकेट कर रहा है और जो ये नेगेटिव मार्केटिंग हो रहा है पोल्ट्री को लेके, अंडे या चिकन को लेके, वो हम लोग उसको आगे उसके ऊपर क्लियरिटी लेके आएंगे।
इसीलिए मीडिया को हमने यहाँ पर एड्रेस करने के लिए लाया है, रिक्वेस्ट किया है कि नेगेटिव जो मार्केटिंग, जो आप लोग खुद प्रेस से हो, मीडिया से हो, जो सच्चाई है वो लेट जाती है और जो नेगेटिव है वो इट इज़ लाइक अ वाइल्ड फायर, वो इमीडिएटली एनहांस हो रहा है। आज हमारे साथ डॉक्टर रविंदर रेड्डी साहब है जो है तेलंगाना में, जो बहुत प्राउडली काम कर रहे हैं, और पोल्ट्री इंडिया आईपीएम जो है, कई ICAR वेटनरियन का पोल्ट्री जो इंस्टीट्यूट्स है ऑल ओवर इंडिया के, उनके साथ कनेक्ट हो चुका है। कोशिश ये है कि हम लोग ये हमारे देश के अंदर एक जागरूकता लेके आए कि हम जो हमारा जो डाइटरी पैटर्न है वो अभी किस तरीके का है, हाउ शुड वी इम्प्रूव आवर हेल्थ ऑफ आवर इंडियन सिटीजन, वो इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए ये मंच पे इतने हमारे इंडस्ट्री के जो वेरियस एसोसिएशन के टॉर्च बेरर्स है, ये लोग आए हैं और पोल्ट्री इंडिया को देखते हैं कि ये एसोसिएशन आगे, उनका भी जो एम है कि हमारे देश को विकसित भारत जो हमारे मोदी जी का है, वही हिसाब से हम आगे लेके चले। तो हमारा विजन तो एक वेरी क्लियरली है कि हमारा देश पोल्ट्री को हम आगे लेके चले, हमारे पोल्ट्री इंडस्ट्री को जो प्रॉब्लम है उसको हम आगे जो भी हो सकता है रिजॉल्व करें, और बहुत स्ट्रेंथ लेके हम हमारे जो नेगेटिव मार्केटिंग्स है और ये सब चीज़ों को हम एड्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे। हेलो, मैं नासिर हुसैन, इंडिया टुडे से। मेरा सवाल तरुण सर से है। तरुण सर हियर। तरुण सर, आपने एक बात कही कि एक पोल्ट्री जो है वो इस देश की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है, नो डाउट, हम अग्री करते हैं आपके साथ। लेकिन सर एक चीज़ अभी नज़र नहीं आती, बड़ी सक्सेस स्टोरी है लेकिन एक्सपोर्ट में हम पीछे हैं। क्या वजह है कि अंडे से लेके चिकन तक हमारा अंडा जा रहा है लेकिन उतना नहीं जा रहा जितना जाना चाहिए। 14,000 करोड़ अंडा हम प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, तो जो नंबर एक्सपोर्ट का है वो बहुत कम है, बहुत छोटा है, और चिकन के मामले में तो हम पीछे हैं। तो सर क्या वजह है कि हम एक्सपोर्ट में आगे नहीं आ पा रहे? उसमें पोल्ट्री सेक्टर को क्या काम करना होगा और गवर्नमेंट को क्या करना होगा? फैक्चुअली यू आर करेक्ट। जैसे अब एग में हम नंबर 2 पे हैं, पर अगर ग्लोबल मार्केट देखी जाए तो हमारा नंबर कोई 25-26वां होगा। वी डेफिनेटली आर नॉट एक्सपोर्टिंग एग्स एंड चिकन कंपेयर टू द साइज ऑफ आवर प्रोडक्शन। यू सी, मेरी थ्योरी ये है कि देयर वाज अ टाइम व्हेन एक्सपोर्ट वाज अ बिग ऑब्सेशन विद अस। वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, वी वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज। आज की तारीख में जहाँ तक हमारे एग्री प्रोडक्ट्स का सवाल है, हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है। इनफैक्ट वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर बेस इन द वर्ल्ड राइट नाउ। Being the biggest consumer base in the world, we are not saddled with the surpluses which we need to export and which become an economic burden on us. You see, export tab karega when you can be very competitive in the export markets. Right now, it is the US and other people who are looking towards India for their to dump their chicken and eggs, etc. Because price में they will be able to compete with us. जैसे industry के लोगों ने बताया कि we have a constraint that we don't have the GM crops. Now, उनकी जो GM crops which go into their poultry feed, etc., make the cost of production very, very low compared to what our cost of production is. I don't think our lack of exports is a big impediment in any way, because we are ourselves a huge market and we consume what we produce. But in future, definitely, we need to develop products which we can export it. जैसे उन्होंने पहले that lady asked the question with respect to sale of live birds. Now, unless we have a good processing facilities, we have a good frozen and processed products, we will not be able to enter the export markets, because their standards of hygiene, etc., are very, very exacting and very, 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 very strict. So we need to mature. There you made a very valid point. We need to mature in that direction. Sir, can I add something to that? Okay, go ahead. Sir, just the cost of, okay, let me, why do you want to export? I want to ask the question back to you. I'll tell you why we don't want to export. I'm from poultry. The per capita consumption of chicken in India is between 6 to 7 kg per person per annum. And it should go up. Per capita consumption of egg, I stand to be corrected by the others, in India is about 90 to 95 eggs per, maybe 102, 103. Very, very, very low. You are a protein deficient citizens. You have a protein deficiency in this country. You can get protein in 2 ways. One, vegetarian source of protein and animal protein. Vegetarian,
you know where to get it from, soy and other things. So you need to consume more. So why do I want to export? Number one, I don't want to export. I've got 1.43 billion people. 71% of Indians are eating chicken and eggs. 71%. We are now more a vegetarian country. Number one. Number two, we will not be able to export. I'll tell you why. The cost of the corn, makkah, is about 14 rupees per kg in those countries which are exporting. Here it is 23, 24, 25. Cost of soy, bean, meal is almost 30% lower in those countries, 30% higher here. Our cost of production in India is higher. We will not be able to compete in the international markets. If you want foreign exchange dollars, then the government should open up, release the hands of the poultry sector and see what the poultry sector will do. But we don't want to export. We have a massive consuming market in this country. You go to countries anywhere, 30 million, 40 million, 60 million people, where you will get 1.43 billion in one geographic location other than China. But we can push the consumption in this country. सर प्योरली आपका सवाल का जवाब देते हुए वी आर नॉट कॉम्पिटिटिव. जैसे अभी नवीन ने बोला, अभी हम यूएस में थे, 14 रुपए का मक्का बिकता है, ठीक है. सोयाबीन मील भी सस्ता है. हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपए है, 92 रुपये है. उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25-30 रुपये कम है हमसे, क्योंकि प्योरली 80-85% सोयाबीन मील और मक्के का कॉस्ट है फीड में. इसलिए हम एक्सपोर्ट वर्दी नहीं है. और अगर एक्सपोर्ट करना ही है, यू वांट टू एक्सप्लोर दैट मार्केट, तो उसका एक ही तरीका है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, और वहाँ पर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करके आप प्रोसेस करके भेजिए. बट वेदर दैट प्रोजेक्ट इज़ वायबल और नो, वी डोंट नो सो फार. जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा. सो बट एज नवीन सेड एंड सर सेड, तरुण जी सेड, कि हमारा खुद का हिंदुस्तान में इतना बड़ा मार्केट है कि एक्सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी हमें. तो सर इसमें एक सवाल उसमें यही जुड़ा हुआ था कि उसके लिए क्या पॉलिसी ऐसी बने, क्या काम हो रहा है पोल्ट्री सेक्टर के थ्रू और गवर्नमेंट के थ्रू. दूसरा, जैसा आप सभी ऐसा है ना, देखिए सर एक चीज और बस जस्ट अ सेकंड में समझने की चीज ये है कि एक्सपोर्ट इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ. व्हाई डू यू लुक फॉर एक्सपोर्ट इज इफ इट गिव्स यू ग्रेटर वैल्यू. यदि मेरा प्रोडक्ट मुझे डोमेस्टिक मार्केट में ज्यादा वैल्यू दे रहा है, देन व्हाई शुड आई गो फॉर एक्सपोर्ट. सेकेंडली, प्लीज अंडरस्टैंड, we are the 4th or 5th biggest producer of meat in the world, but our per capita consumption is lowest in the world. The per capita meat consumption in this country is 3 kilograms per annum. 3 kilograms. Bangladesh हमसे ऊपर है. All third world countries are above us. So we have this tremendous gap in terms of the potential to grow. Export, yes, but provided export will give us greater value. अगर मेरे को एक्सपोर्ट में दाम ही नहीं मिलेंगे, उससे ज़्यादा दाम मुझे अपने घर पे मिल रहे हैं, देन व्हाई शुड आई गो फॉर एक्सपोर्ट्स. दैट इज द इशू. लेकिन घर पर भी हम ये समझाने में अभी थोड़ा उतने कामयाब नहीं हो पा रहे कि अंडे में चूजा होता है या नहीं. अंडे डोमेस्टिक मार्केट में भी ये प्रॉब्लम आ रही है. थैंक यू. निज़र साहब, यही तो अभी लक्ष्य हम बना के चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्केटिंग हमको निकालना है. ये पूरे देश के जितने बड़े एसोसिएशंस है, छोटे बड़े हमारे, आज हम लोग सब एकजुट होके चल रहे हैं. हर एक का एक मंशा है कि हम ये देश को आगे बढ़ाएं, और जो नेगेटिव मार्केटिंग है हर लेवल इसके लिए. So we will take it forward. Yeah. Gulati sahab, I need on that. I just want to add something which I forgot to add. The Poultry India show makes a profit through the trade show. What happens to the money? The money, I think Uday sir did not explain it. I'll add to that. I don't know whether I should say this. I'll go ahead and say this. Poultry India is setting up a confederation of associations across India with a 5 crore rupees fund. Now, why are they doing that? Sir, you should explain, but I'll add, you can please add to that. Why are they doing that? They want all associations of poultry activity to come under one roof and talk to the government under one voice. When we go to, so that money is going to be used to positively promote consumption of chicken and eggs. So if Poultry India is going to put that 5 CR
make confederation of associations of association of associations. All the associations also will put in some money, make a larger fund, and they are going to promote. So, Anil sir, Yes, Uday, yes, can you please add on this? You are absolutely right. अभी किसी ने बात की थी कि संडे या हो या मंडे रोज खाओ अंडे, अभी आजकल ऐड नहीं आ रही है वो. अभी जो ऐड आ रही है वो पूरी फंडेड है एनईसीसी के तरफ से, यानी वीएच ग्रुप और एनईसीसी वो लोग पैसा डाल के ये बना रहे हैं. अभी सबको लिमिट है, कितना काम करे सबको लिमिट है, पर अगर सब लोग इकट्ठा होके फंड बनाए और काम करे तो उसको लिमिट ही नहीं है कोई, क्योंकि हम लोग सब साथ में रहेंगे. और पोल्ट्री इंडिया के तरफ से हमारे पास जो सरप्लस आता है या आएगा इन फ्यूचर, उसमें से कुछ पार्ट हम लोग इसमें डाल रहे हैं ये नए एसोसिएशन में, जो कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन पोल्ट्री एसोसिएशंस रहे, उसका नाम है PI सिपा. तो उस माध्यम से हम लोग सब जगह प्रमोशन करेंगे और चिकन और अंडे का बढ़त प्रोडक्ट कंजम्पशन बढ़ने के लिए जो भी कर सकते हैं वो करेंगे उसमें. उससे क्या होगा कि पूरी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा. एक आदमी कोई ज़्यादा काम कर नहीं सकता है, पर अगर ये एसोसिएशन इकट्ठा होकर काम करेंगे तो पूरे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा. जैसा अभी नवीन ने बोला है कि हमारा कंजम्पशन कुछ 100 एग्स है पर ईयर पर हेड, और यूएस का है 260 270. तो इतना फ़र्क है. तो अगर हमको अच्छा एक सिटीज़न देना है, यंग जनरेशन अपने को अच्छी सशक्त बनाना है, तो उसको प्रोटीन डिफिशिएंट नहीं रहना चाहिए. और प्रोटीन डिफिशिएंसी कम करने के लिए अंडा और चिकन सबसे अच्छा है और सबसे सस्ता प्रोटीन है. उसको बढ़त होने के लिए बहुत सारे पोल्ट्री फार्म्स आना चाहिए. सब पोल्ट्री फार्म आएंगे तो बढ़त ज़्यादा होगी, उनका कंजम्पशन ज़्यादा होगा, और इस तरह से जो रूरल एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, तो पूरे ग्रामीण संस्कृति अपनी बदल जाएगी. तो ये सब जो है ये धीरे धीरे होगा, पर उसके लिए कोई ना कोई तो प्रयास करना चाहिए. तो हमने सोचा कि चलो पोल्ट्री इंडिया की तरफ से ये प्रयास करें, हम लोग कुछ पैसा डालें, कारवा बनते जाएगा. एक बार चल पड़े तो उसमें साथ में लोग जुड़ जाएंगे, चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सब कोई फिर बाद में साथ दे सकता है. एक आदमी का ये काम नहीं है. हमको बहुत वी आर वेरी थैंकफुल टू वीएच ग्रुप कि एनएसीसी और वीएच ग्रुप की वो लोग इतना कर रहे हैं और इतना अच्छा उनको एडवर्टीजमेंट वगैरह करके बना रहे हैं. तो इसको हमको सबको साथ देना चाहिए और सब इकट्ठा होकर करना चाहिए. तो ये जो नया एसोसिएशन बनेगा उसको भी ये फंडिंग पोल्ट्री इंडिया से आएगा. पोल्ट्री इंडिया इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. वी आर ऑल डूइंग ऑनररी वर्क. वी आर नॉट टेकिंग एनी सैलरीज आउट ऑफ इट. वी आर स्पेंडिंग आवर टाइम. दैट इज़ व्हाट वी आर इन्वेस्टिंग. We have, everybody has our own businesses, but we are taking time and coming together. So we request everybody from the poultry industry to come together and help this cause. Thank you, Naveen, for getting us on that track, actually. Yeah, thank you for getting it, actually. तो नवीन ने जो बात किया है, much more will come through it, you see. So no, thank you, if we are thinking of 100 crores, 5 crore is very small, you see. So this is all, the PI SIFA is now going to have all the major associations along with us, and Mr. Gulati sir has already joined us on those lines. We have more associations joining us. So we will be utilizing these funds, as rightly said by Dumal sir, to make a much better poultry. And we started with 2007 with one idea, one expo, one nation, which is successful today. Let's start this. Today, Delhi, we take this pratigya of making it more wonderful and make it possible that whatever negative marketing is coming, we're going to support it. And thanks again to all the major stakeholders and all their people who have taken their time out. Thank you once again. We will have a brochure launch. Hello.